Okay, let us start. Practice set 3.3 of third chapter. Now, before we start with the practice set, let me explain you what extra we are going to study in this. In 3.1, we studied how to find A and D, that is the first term and common term, and how to identify whether it is AP or not. In 3.2, we learned to find that nth term formula आप जानते हो, Tn equal to A plus n minus 1 into D. In that we found Tn term. If they give you nth term they are given you, then we also learned, and we know A and D, then we also learned to find n. What is number of, how many number of terms are there in a AP, etc. In this 3.3, we are going to study some of the terms of arithmetic progression. For that we need a formula. The formula is Sn, sum of n terms is n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 bracket complete d whole bracket complete. Or if you, now first formula we are going to use if you know n, if you know a, if you know d. But they give you, instead of n, a, d, they give you T1, the first term, and the last term. And they ask you to find Sn. Then the second formula we are going to use Sn equal to n upon 2 bracket T1 plus Tn. Okay? So let us now start with the question. The first question of 3.3, they are given us value of A, which is 6, D is 3, A is 6, D is 3, and they ask you to find S27. S27 means n is equal to 27. You should know, n is 27. So let us find solution. Sn formula you know, n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d bracket complete. Therefore S27 will be 27 upon 2 bracket 2 into 6 plus 27 minus 1 into 3. Therefore, S27 will be 27 upon 2, this will be 6 to the 12, plus 26 into 3. So what do we have? 27 upon 2, 12 plus 3 6s are 18, 1 carry, 3 2s are 6, plus 1 7, 78. So 27 upon 2 into this is 78 plus 12 is 90. S27. So 2 1s are 45. So S27 is 27 into 45. So S27 की value क्या होगी? So it is 45 upon 27. 7 5s are 35. 3 carry. 7 4s are 28 plus 3. 28 plus 3 कितना? 29 30 31. 3 1. 2 5s are 10. Okay, 2 5s are 10. 1 carry. 2 4s are 8 plus 1 9. तो क्या होता है 5 1 12. Answer is 1 2 1 5.
फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड. बॉक्सेस हैं वो आप डाल दो, बिकॉज ऑफ इज लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक योर एक्टिविटी. सो जहाँ उन्होंने ब्लैक बॉक्सेस डाले हैं या पूछे हैं, आप बॉक्सेस डाल दो. नाउ वी कम टू योर क्वेश्चन नंबर 2. Now what they are given us is, if you read the question, you realize that they say, find the sum of 123 even natural numbers. 123 even natural numbers. Question 2. See, natural number starts from 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we want n 123. So solution देखो, n equal to 123. Okay. What will be the sequence? Sequence हमें find करना पड़ेगा. Okay. Total natural numbers. Total natural 123 are total natural numbers they given you. Now what? Now what will be when you going to count even natural numbers? Natural numbers तो हो गया. Even natural numbers चाहिए हमें. So even numbers start with 2n. So if n is equal to 1, 2n क्या होगा? 2. So first natural number will be, मतलब first even natural number will be 2. अगर 2 होगा तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 10 and so on. Continues. What will be 123rd natural number? 123 into. If n is equal to 123, so 2 into 123 will be 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2. So we have 246. So these are total natural numbers, 123 natural numbers we know. So nth term मिल गया. Now they say find s sum of the sum पूछा है ना, sum of all 123 numbers. चलो find करते हैं. Here formula क्या है अपना याद रखो. Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 d. So we have a कितना है यहाँ 2. I think it is ap दिया हुआ है. Okay, फाइंड करना पड़ेगा d. A is equal to t1 equal to 2. What is t2? 4. What is t3? 6. Therefore, and t4 with 8. Therefore, t2 minus t1, 4 minus 2 equal to 2. t3 minus t2, 6 minus 4 equal to 2. t4 minus t3, 8 minus 6 equal to 2. Therefore, common difference D is 2 is gone. Therefore, the sequence is arithmetic progression. So therefore, अभी क्या क्या we know? Therefore, S अच्छा हमें चाहिए A, therefore A is equal to 2.
D is equal to 2. देखो A is equal to 2, D is also equal to 2, N दिया है 123. Now let's find Sn. Therefore Sn का फॉर्मूला लो, n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. So we know the formula. Let us solve it. Solve करते हैं. Sn कितना है भाई? तो नहीं मालूम. 123. N is 123. So S 123 will be 123 upon 2. 2 into A is 2 plus N minus, so it will be 123 minus 1, and D is also 2. So it is into 2. इसको थोड़ा जरा इस साइड लेते हैं. So S 123 equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 d. Solve करो इसको. 123 upon 2, 2 into a की वैल्यू है 2 plus 123 minus 1 into 2. So it is 123 upon 2. This will be 4 plus 122 into 2. 123 upon 2. 4 plus 2 to the 4, 2 to the 4 into. So this is 123 upon 2 into 248. Divide करो. 2 ones are 2, 2 to the 4, 2 4 8. So 123 into 124 will give you the, multiply करो, value लेंगे. So 124 into 123. 3 4s are 12. 3 to the 6, 7, 3. 2 4s are 8, 2 to the 4, 2 1s are 2. 4, 2, 1. Add करो 2, 15. 4 to the 12, 5, 1. So answer is 152, 5, 2. Yes, 123. ये आ गया इसका आंसर. We go for next question. That is question number 3. Question number 3 of practice set 3.3. Let us understand what they are given. They are given you that find the sum of numbers, even numbers between 1 and 350. So we have to find sum of, or before, numbers between, numbers, even numbers लिखो, sorry, even numbers between 1 and 350 are even numbers are the 2, 4, 6, 8, dot. Even number starts with 2. So पहला number 2 आ गया. They are said between 1 and 350. The last number is 350. हमें वो नहीं चाहिए. It has to be within 350. तो 350 is a even number, तो वो तो हमने नहीं लेना है because inside 350 चाहिए. तो 350 के less than 350 कौन सा number है? एक number less 349. 349 is not an even number. 348, yes, 348 is an even number. So last term we know 348. Here A is equal to T1 equal to the first term we know. Okay. T2 is 4.
T3 is 6 and Tn is 348. So Tn also we know. Therefore, what is common difference? Common difference is D. कोई भी दो नंबर लो, two terms, T2 minus T1, that is 4 minus 2 equal to 2. So we now know D also. We know A, we know Tn, we know D. And what they say, we have to find the sum of all the numbers, all the even numbers between 1 and 250. That means these are even numbers. ये सबका हमें टोटल फाइंड करना है. अभी n कितने नंबर, वी डोंट नो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस n, तो पहले n निकालना पड़ेगा. n कैसे निकालेंगे? हमने ये n निकाला है अर्लियर प्रैक्टिस सेट में. Tn with यूजिंग द फॉर्मूला Tn, और Tn की वैल्यू हम जानते हैं. Therefore, what is Tn फॉर्मूला? a plus n minus 1 into d. तो Tn की वैल्यू हम जानते हैं कितना है, 348 इक्वल टू 2 प्लस n हमें फाइंड करना है इंटू 2. 2 को इस साइड लेके आओ, ये 2 को 348 माइनस 2 इक्वल टू 2 इन, और ये 2 इंटू n, 2n माइनस 2. Therefore you get 346 इक्वल टू 2n माइनस 2. ये 2n को इस साइड लेके आओ, we get 346 plus 2 equal to 2n. Therefore 2n equal to 348. चलो डिवाइड करो, n डिवाइडेड बोथ साइड बाय 2. 348 डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा ये? 3 1 जा 3. So n will be, sorry, 2 1s are 2, 1 carry, 2 7s are 14, and 2 4s are 8. So n तो हमें मिल गया. What is the value of n? 174. So हमें Sn फाइंड करना है. What is Sn? Sn will be n upon 2. अब हमारे पास दो फॉर्मूला, we have two formulas. We can use the A, D, N, etc. But that will be a lengthy process. ज़्यादा टाइम लगेगा. The other formula is, if we know, ये हम उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं. If we know first term of the sequence and the last term of the sequence, T1 और Tn दोनों हम जानते हैं. यूज करो उसको. This will be T1 plus Tn. तो ये आएगा 174 upon 2. T1 की वैल्यू है 2 और 348. 2 plus 348. तो ये कितना होगा? 2 8 2 7 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 कैरी 14 होता है, 2 7 जा 14, तो 87 into 350. S कितना है ये? S 174. S 174. अब 87 into 35 मल्टीप्लाई करो, और बाद में ये जीरो बाद में डालो, पुट जीरो आफ्टरवर्ड्स. ओके, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 जा 40 प्लस 3 43, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 प्लस 2 25 26. ऐड करो 5 4 10. तो यहाँ आता है 3045, लेकिन डोंट फॉरगेट वी आर मल्टीप्लाइड ओनली विद 35, लेकिन ये 350 है, सो पुट जीरो आफ्टरवर्ड्स. तो ये हो गया आपका सम ऑफ द इवन नंबर्स between 1 and 350. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो उसके लिए हम इसको इरेज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में
जरा ध्यान से देखो, पढ़ो. इफ यू रीड द क्वेश्चन आपको समझेगा. इन एपी, तो उन्होंने पहले एपी दिया है. 19th टर्म इज 52, 38th टर्म इज 128. तो हम लोग वो लिख लेते हैं कोने में लिख लेते हैं. ये जो 19th टर्म है, 19th term is 52 and T38th term is 128. You have to find S56. You have to find sum of all 56 terms. ये हमें find करना है. So solution of Question 4. चलो करते हैं. Let first term of AP be A and common difference be D. Okay, first term is A and common difference is D. Therefore, what will be Tn? Formula भूलो मत. Tn is equal to A plus n minus 1 into D. ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है पहले, और बाद में कौन सा इस्तेमाल करना है? Then Sn equal to n upon 2a plus n minus 1 into d. ये फॉर्मूला बाद में इस्तेमाल करना है. तो हमें S56 चाहिए ना, तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला फर्स्ट, और हमें बाद में पता चलेगा क्या करना है. आप देखो now n equal to 56. Therefore S56 equal to 56 upon 2a plus 56 minus 1 into d. Therefore S56 equal to 28 into bracket 2a plus 55d. अब इसको ध्यान से देखो. I keep it as equation number 1. हमें ये फाइंड करना है, S56 फाइंड करना है, but we don't know what is A, we don't know what is D. तो हम पहले we know T19 and T38, तो इसका इस्तेमाल करके देखते हैं कि कैन वी फाइंड A and D. चलो लेट्स स्टार्ट. Therefore, now T19 will be ये formula A plus 19 minus 1 into D. Therefore T19 they are given us. What is T19? 53. 53 है ना? 52 है. लगाया था, मुझे डाउट था, बन गए. 52. Therefore 52 equal to A plus 18D. यहाँ लिखने का है since n equal to 19 and T19 is 52. Therefore we can say A plus 18D equal to 52. Call this as equation number 2. Now go for next term. T38 equal to A plus 38 minus 1 into D. Next line पे लिखो. It will be T38 will be A plus 37D. But what is T38 कितना है? 128. So 128 equal to A plus 37D. इसको प्रॉपरली लिखो. Therefore A plus 37D is 128.
नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, इसको जरूरत नहीं अभी. वी हैव टू ऑप्शंस. एक तो वी हैव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इनको सॉल्व करो, मतलब अगर तुम इनको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, इफ यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3, तुमको डी वैल्यू मिलेगी. डी की वैल्यू तुम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो और तुमको ए की वैल्यू मिलेगी. और जो ए डी की वैल्यू मिलेगी वो आप इसमें डालो एंड यू गेट S56. ये पहला मेथड है. दूसरा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे को 55 डी आया है. यहाँ क्या है 18 डी और यहाँ क्या है 37. 18 + 37 is 55 डी. तो 55 डी मिल रहा है. और ये क्या है a + a 2a. सो 2a + 55 यहाँ मिल रहा है. तो क्यों है a और d फाइंड करें, सीधा इनको ऐड कर दो. ये क्वेश्चन नंबर 3 है. तो एडिंग इक्वेशन 2 and 3, ऐड करो इक्वेशन 2 and 3. इक्वेशन 2 is a + 18d. इक्वेशन 2 is a + 18d और वो है a + 37d. ऐड करो a + a 2a + 18 + 37 + 55d. 52 + 128 180. तो हमें ये 2a + 55d की वैल्यू मिल गई. Just substitute in equation 1. So put value of 2a + 55d in equation 1. Therefore S56 क्या हुआ 28 as it is, और ब्रैकेट के अंदर इंस्टेड ऑफ 2a + 55d add put 180. तो मल्टीप्लाई करो एंड यू गेट द आंसर. सो 28 × 18 डाल रहा हूं मैं. 28 × 18 करूंगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके पीछे में 0 डाल दूंगा ताकि वो 180 हो जाएगा. 8 8 = 64, 6 कैरी. 8 2 = 16 + 6 22. अब 1 से मल्टीप्लाई करो. सो 1 8 = 8 and 1 2 = 2. ऐड करो 4 10 1, यह आता है 5 0 5 0 4 0. ये आपका आएगा सम ऑफ द 56 नंबर्स. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें इरेज करना पड़ेगा इसको. सो इरेज दिस. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्टिविटी. देखो एक्टिविटी है लेकिन आई विल सॉल्व इट. मैं यहां सॉल्व कर दूंगा एंड देन वी विल पुट इन बॉक्सेस जो ब्लैंक्स उन्होंने हमको कहा है ना, ब्लैंक्स में सब्स्टिट्यूट करो. बाद में हम उनको जो चाहिए वो वैल्यू उसको बॉक्स में डाल देंगे. सो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में. क्वेश्चन नंबर 5 दे आर गिवन अस complete the following activity to find the sum of natural numbers between 1 and 140 which are divisible by 4. जैसे ये दिया था solution 5 नंबर्स है ना, नंबर्स क्या, इवन नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स क्या दिया उन्होंने. They say natural numbers. Okay? Natural numbers between 1 and 140 which are divisible by 4 are. पहले वो नंबर लिख लो. 4 4 × 8, 4 3 × 12, 4 4 × 16, blah 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 blah. ओके. 4 के टेबल में 140 जाता है. तुम लोग देख लो 140. इट विल बी समथिंग 4 3 × 12
and 4 5s are 20, 35 4s. ओके, लेकिन हमें 35 4s इज 140, तो हमें 140 नहीं चाहिए. वी वांट बिटवीन 1 and 140. सो 4 नंबर पीछे आओ. किस डिविजिबल बाय 4 है ना, एवरी नंबर हैज टू बी डिविजिबल बाय 4. तो 134th नंबर मतलब 4 नंबर पीछे आओ, तो वी गेट दिस नंबर एज द लास्ट टर्म एज 136. लास्ट का टर्म होगा 136. दे डिवाइड बाय 4 होता है कि नहीं. 4 3 12, 1 कैरी, 4 4 16. 34th नंबर, 34th टर्म इनफैक्ट. अब उन्होंने बोला है, व्हाट दे हैव सेड, फाइंड द सम ऑफ. अभी पहले तो हमें n फाइंड करना है, तो हमें तो n फाइंड कर ही लिया. 34 टर्म्स है, लेकिन फिर भी हम लोग n फाइंड करते हैं. ओरली तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं. हाउ मेनी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. ओके, तो हियर जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही करना है. हियर a is equal to t1 equal to 4, t2 equal to 8, and tn equal to 136. Therefore, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? Common difference is t2 minus t1. Therefore, d equal to common difference. D equal to 8 minus 4. Therefore, d equal to 4. We know A, we know Tn, and we know common difference. So find n. Therefore, using formula Tn. T equal to a plus n minus 1 into d. ये n minus 1 है बच्चों, 8 minus 1. n minus 1. Therefore Tn कितना है? 136. A is 4 plus n हमें फाइंड करना है. We have to find the value of n into d is 4. ये 4 इस साइड लेके आओ. Therefore 136 minus 4 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू n, 4n माइनस 4. देयरफॉर ये आता है 132 इक्वल टू 4n माइनस 4. वो माइनस 4n को इस साइड लेके आओ, तो वी गेट 132 प्लस 4 इक्वल टू 4n. देयरफॉर इन शॉर्ट 4n इक्वल टू 136 डिवाइड बाय 4 करो, n इक्वल टू, देयरफॉर n इक्वल टू 4 3s are 12, 1 कैरी, 16 होता है. 4 4 16. मैंने आपको पहले ही कहा था, हमने ओरली ही निकाल दिया था, बिकॉज 4 इंटू 35 इज 140. सो एक टर्म कम ले लो ताकि अपने को 1 और 140 के बीच में आना चाहिए नंबर. सो 4 से स्टार्ट किया है, और 34th नंबर, 35th नंबर इज 140. तो 4 पीछे आ जाओ, तो 140 माइनस 4 इज 136. और वो एक टर्म कम है, तो इसका मतलब 34 टर्म होना चाहिए था. सो वंस यू गेट n equal 34, देन वी गो फॉर S34. अभी S34 को भी तुम आप लोग फाइंड कर सकते हो, बिकॉज वी नो फर्स्ट टर्म, वी नो लास्ट टर्म, एंड वी ऑल्सो नो n वैल्यू. सो लेकिन उन्होंने क्या दिया है ब्लैंक में. अच्छा, ओके, लेकिन हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अपने फॉर्मूला से कर सकते हैं एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 t1 प्लस tn. लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक्टिविटी में उन्होंने वो फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल किया है, उन्होंने वो a d n इस्तेमाल किया है. तो चलो वो इस्तेमाल करते हैं, विल यूज दैट फॉर्मूला. तो पहले फॉर्मूला लिखो, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d. लंबा फॉर्मूला इस्तेमाल किया. चलो, देयरफॉर S34 इक्वल टू 34 अपॉन 2. a की वैल्यू कितनी है? 4.
प्लस 34 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 4। सॉल्व करते हैं। देयरफॉर इज 34, ये होगा आपका 17 और ये होगा 4 2 8 प्लस 33 इंटू 4। 34 माइनस 1 इज 33 इंटू 4। ये 17 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस 33 और 4 को मल्टीप्लाई करो। सो 4 3 12, 1 कैरी, 4 3 12 and plus 1 13. So we get 132. 17 into, ये ऐड करो, 132 plus 8 is 140. So S34 क्या होगा? Therefore S34 equal to 17 into 4 को 14 को मल्टीप्लाई करो, 17 into 14. ओके, आप लोग जानते हो 14, अच्छा 14 से टेबल, 14 का टेबल आता है ना, नहीं तो तुम लोग नॉर्मली करते हो 4 से पहले करो बाद में 1 से करो, वैसे भी चलेगा। देखो 14 5 आता है 70, मैं तुमको इजी बताता हूँ। 14 5 इज 70 और 14 2 28, तो 70 प्लस 28 इज 98। सो 8 और 9 मैं अपने हिसाब से करता हूँ। 14 5 और बाद में 14 2 और 5 और 2 ऐड करो तो 14 7 तो 14 5 70 और 14 2 28, 70 और 20 ऐड करो, आपको आता है 98। 8 लिखो, 9 कैरी और 14 1 14, 14 प्लस 9 इज 23। तो आता है ये 2 3 8 और भूलो मत हमने 14 से मल्टीप्लाई, ये क्या है 140, सो पुट 0। ये हो गया आपका आंसर इज 34। और जहां जहां ब्रैकेट डाला है डाल दो आप एक्टिविटी में देख के। ओके, मेरा टेक्स्ट बुक में देखो और एक्टिविटी में कहाँ कहाँ बॉक्स है वो इसमें हम डाल दो। नेक्स्ट गो टू क्वेश्चन नंबर, या आपको थोड़ा एक्टिविटी फ्रॉम माई साइड बॉक्स डालू जब लिखोगे तब, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है। देयर इज नॉट ऐसे दैट एग्जामिनेशन वो एक्टिविटी, ये क्वेश्चन को एक्टिविटी के फॉर्म में ही देंगे। दे मे गिव इन दिस फॉर्म। ओके, तो मतलब एक क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे सो भाई सॉल्व करो, हमें ये सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अलग है लेकिन अच्छे हैं। थोड़े अलग है लेकिन अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाओ, सॉल्यूशन 6 जो है। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, दे से सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स ऑफ एपी इज 330, फाइंड द 28th टर्म। तो उन्होंने n इक्वल टू 55 और s 55 आपको दिया हुआ है। सम ऑफ 55 टर्म्स इज 330, 3300 सॉरी, और T28 फाइंड करना है हमें। 28th टर्म फाइंड करना है। n 55, सो Sn दिया हुआ है 330, 28th टर्म फाइंड करना है। बिल्कुल टेंशन मत लो, आसान है। प्रोसीड करते हैं। सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट टर्म and common difference of AP, of given AP B, A and D respectively. हमें क्या फाइंड, अच्छा देन दिया गिवन अस n इक्वल 55 Sn। व्हाट इज
Sn formula n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. Now n is 55 और Sn is 330. तो चलो सॉल्व करते हैं. Therefore S55 equal to 55 upon 2, 2a plus 55 minus 1 into d. S55 is 330. So 3300 equal to 55 upon 2. यह आएगा आपका 2a plus 54d. ये दोनों 55 upon 2 इस साइड लेके आओ तो इट विल बी 2 upon 55. Therefore, it will be 2 upon 55 into 3300 का मतलब 100. मैं स्प्लिट कर रहा हूँ. 3300 is 33 into 100 equal to 2a. 2 कॉमन निकालता हूँ बाहर इसमें तो इट विल बी a plus 27d. ओके. 11 3s are 11 5. Then you have 5 1s are 5 2s are. So what we have 6 2s are 12. 120 divided by 2 लेता हूँ equal to a plus 27d. ये 2 1s are 60 आता है. So we get a plus 27d equal to 60. अभी ध्यान दो इसको. Call this as equation 1. अभी हम जाते हैं T28. They ask you what? उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने हमको पूछा है find the 20th term. तो चलो 20th term फाइंड करते हैं. फॉर्मूला क्या है Tn का? Tn is a plus n minus 1 into d. So T28 क्या होगा? अगर n28 होगा तो T28 मतलब n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 28 है. तो लिखो a plus 28 minus 1 into d. सॉल्व करो. Therefore T28 equal to a plus 27d. इसको इक्वेशन 2 कहो. Now we know equation 1 and equation 2. कंपेयर करो. देखो a plus 27d, यहाँ भी a plus 27d. 60 है उसकी वैल्यू और ये 20. तो 20th टर्म क्या हो गया? 60. From 1 and 2, we get T28 equal to 60. Answer लिखो. Therefore, 20th term of given AP is 60. अभी 7th क्वेश्चन पे जा रहे हैं. Let's go to 7th question. अब 7th क्वेश्चन के लिए जाने के लिए हमें 6th क्वेश्चन को इरेज करना है. और 7th क्वेश्चन, प्लीज रीड 7th क्वेश्चन प्रॉपरली. 7th क्वेश्चन को देखो. वीडियो में क्या हम आगे जाते हैं. एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन. तो अगर आपको तरीका ये है कि आपको मालूम होगा. नाउ यू पीपल आर वेरी स्मार्ट. आप बच्चे जो होते हैं आजकल के वो हम लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं टेक्नोलॉजी में. तो क्वेश्चन होने के बाद इसको पॉज करो वीडियो को, इसको समझ लो, एक बार प्रैक्टिस करो और बाद में आगे जाओ. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? In an AP, sum of the 3 consecutive terms, अभी consecutive terms बोले, is 27. 3 sum of addition, मतलब addition of 3 consecutive terms is 27 and the product is 54.
फाइंड द टर्म्स। चलो भाई टर्म्स फाइंड करते हैं। आप लोग जानते हो कि फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज ए और कॉमन डिफरेंस क्या है? डी। हमेशा हम लोग जो एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका फर्स्ट टर्म ए एज्यूम करते हैं या डी एज अ कॉमन डिफरेंस। तो हमें 3 टर्म लेने तो कैसे होंगे? उन्होंने आपको हिंट दिया है टेक्स्ट बुक में, तो हिंट वैसा होगा ए माइनस डी कॉमा ए एंड ए प्लस डी। ये 3 हम लोग क्वेश्चन मतलब 3 टर्म्स ले लेते हैं अंडर कंसिडरेशन। तो सम ऑफ द 3 टर्म्स कितना दिया है आपको? अरे भूल गया भाई मैं। सम ऑफ द 2 टर्म्स इज 27, 3 टर्म्स, ओके। सम ऑफ द 3 टर्म्स इज 27 and प्रोडक्ट ऑफ द 3 टर्म्स इज 504। उनका जो प्रोडक्ट है वो 504 है। प्रोडक्ट का कोई कॉन्सेप्ट एपी में मतलब यहाँ नहीं है, हमें अलग तरीके से करना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने ऐसे पी लिखा है उसको, ओके, टू अंडरस्टैंड पी मतलब प्रोडक्ट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट द 3, अच्छा पहले लिखना पड़ेगा लेट the first term and common difference of given AP, B, A and D respectively। चलो भाई ये लिख लिया। Let the first term and a common difference, let the first term and a common difference of a given AP be A and D respectively. Therefore, the 3 terms, हम लोग वर्ड्स में लिखे तो भी चलेगा, the 3 terms of APR, APB हम लिखते हैं B, A माइनस D, R अच्छा है R, therefore let the 3 terms of APB A minus D, A and A plus D, ये हमने 3 terms ले लिए। From first condition, from first condition उन्होंने बोला है addition, sum of these 3 terms, therefore add करो A minus D plus A plus D equal to 27। ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 0 हो जाता है। सो A plus A वी हैव 3A equal to 27। so A क्या होगा? 27 divided by 3, therefore A value is 9। A की वैल्यू हमें मिल गई। अभी फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन उन्होंने प्रोडक्ट बोला है, therefore A minus D into A plus D is equal to 504। 504 मतलब 504। A की वैल्यू हमने फाइंड की है। व्हाट इज A वैल्यू? 9। सो सब्स्टिट्यूट करो यहां, therefore 9 minus D into 9 plus D equal to 504। तो दोनों साइड को 9 से डिवाइड करो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9। सो हमें क्या मिलता है? 9 minus D into 9 plus D, A minus D, A plus D equal to 504 divided by 9। सो 9 9 का कितना होता है? 81, बराबर ना? 9 स्क्वायर। इनफैक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने का, A minus B, A plus B, A square minus B square। सो 9 square minus D square is 5 ones are 5, 9 ones are 9, 5, 9 ones are 9, 9 5s are 45, 9 6s are 54।
तो 9 square is 81 minus d square equal to 56. Therefore 81 minus 56 equal to d square. d square कितना आता है? 81 minus 56 is 25. Taking square root on both sides. दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो. Therefore we get a equal to plus or minus 5. So d की वैल्यू पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है, तो हमें दो सेट ऑफ वैल्यूज मिलेंगे. Therefore if d equal to 5, then a minus d is, a की वैल्यू 9 है, 9 minus 5 equal to 4. a plus d is 9 plus 5 equal to 14. If a equal to minus 5, then a 5 होगा तो we got this two value. A is minus 5, then we have a minus d equal to a minus of 9 minus of minus 5 equal to 14, and a plus d equal to 9 plus minus 5, 9 minus 5 equal to 4. Therefore the three terms of APR, three terms of APR, तीन सेट्स हैं, तो अपने को दो सेट ऑफ नंबर्स मिलेंगे क्योंकि डी पॉजिटिव और नेगेटिव आया. सो थ्री टर्म्स ऑफ APR, पहला पॉजिटिव है, पहले 4, 9, 14 और 14, 9, 4. ये है टर्म्स. उनके जो सीक्वेंस है वो अलग होगा. अगर पॉजिटिव है तो 4, 9, 14, मतलब अगर डी पॉजिटिव है तो 4, 9, 14, डी नेगेटिव है तो 14, 9, 4. पढ़ लो इसको, अच्छी तरह से पढ़ो, समझो, पॉज करके वीडियो को, और बाद में हम आगे बढ़ते हैं. मैं इसको अभी इरेज करता हूं. थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स तो अपने हो गए. क्वेश्चन नंबर 7 में, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. अभी 4 टर्म्स लेने हैं अपने को इन एन एपी हुज सम इज 12 एंड, अच्छा टोटल सम, जितने 4 नंबर्स हैं, 4 टर्म्स हैं, ऑल 4 टर्म्स सम इज 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड द फोर्थ टर्म इज 14. तो चलो हम 4 टर्म्स लेते हैं. लेट द 4 टर्म्स, सॉल्यूशन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे ख्याल से ना. हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन 8. लेट द फर्स्ट टर्म and common difference of the given arithmetic progression be A and D respectively. इज्जत से. Therefore फोर टर्म्स बोला है. पहला टर्म ए है, उसके पहले का टर्म एक हम डी, एक डिफरेंस, मतलब हम ए माइनस डी लेते हैं. सो ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d. ये हो गया आपके 4 टर्म्स. देयरफॉर द फर्स्ट, therefore the 4 terms
of AP, B A minus D, A plus D और A plus D मतलब A plus 2D। ये हो गया आपके 4 टर्म्स फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या दिया उन्होंने? A minus D plus A plus D plus A plus 2D equal to 14 है 12 सॉरी। सम ऑफ द 4 टर्म्स उन्होंने दिया है 12। तो ये हो गया 8 1 2 3 4 4 टाइम्स A, सो इट इज 4A। और ये माइनस डी ये प्लस डी कैंसल, तो ये हो गया प्लस 2D इक्वल टू 12, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 मिलता है 2A प्लस D इक्वल टू 6। इसको हाईलाइट कर दो। नाउ दे से द सम ऑफ मतलब एडिशन ऑफ third and fourth term from second condition। थर्ड टर्म है A प्लस D और फोर्थ टर्म है A प्लस 2D इक्वल टू 14। वही दिया है ना उन्होंने। द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। चलो अब हमें इसको ऐड करो। A प्लस 8 2A प्लस 3D इक्वल टू 14। ये हो गया अपना इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। A और D की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद वो 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो ये 2 है, ये 2A है, ये 2A सेकेंड टर्म। सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो पहला इक्वेशन लिखो 2A प्लस D इक्वल टू 6। और दूसरा इक्वेशन क्या है 2A प्लस 3D इक्वल टू 14। एक लाइन ड्रॉ करो, मतलब एक लाइन के बाद एक लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद बीच में माइनस। अभी आपको मैंने कहा था कैसे करना है, माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस। अब ये माइनस को भूल जाना है और ये 2A माइनस 2A कैंसिल हो गया। D माइनस 3D इज माइनस 2D, 6 minus 14 is minus 8. Therefore D is minus 8 upon minus 2. Therefore D आ गया अपना 4. Now put that value of D in equation 1. Put D equal to 4 in equation 1. क्या मिलता है 2A प्लस D। देखो ये 2A प्लस D इक्वल टू 6। Therefore 2A प्लस D के बदले 4 इक्वल टू 6। Therefore 2A इक्वल टू 6 माइनस 4। Therefore A इक्वल टू 2 अपॉन 2। A की वैल्यू क्या है 1। हमें A की वैल्यू भी मिली, हमें D की वैल्यू भी मिली। So find the 4 terms. Therefore पहला टर्म क्या है A माइनस D, so it will be 1 minus 4 A minus 3। दूसरा है A, so it is 1। बाद में A plus D, 1 plus 4 5 and A plus 2D, 1 plus 2 into 4, 1 plus 8 9। Therefore answer अभी लिखो, the 4
terms of AP are -3, 1, 5, 9. ये हो गया 4 टर्म्स. क्या करना है आप जानते हो. पॉज करो वीडियो, समझो, सॉल्व करो खुद प्रैक्टिस, उसके बाद आगे बढ़ो. लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.3 करेंगे अभी. दैट इज 9th क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन दिया है, चलो पढ़ लेते हैं. इफ द 9th टर्म T9 ऑफ AP इज 0, मतलब T9 इक्वल टू 0 दिया है उन्होंने. शो द 29th टर्म, मतलब T29 इज ट्वाइस, वन डबल द 19th टर्म. 9th टर्म, 29th टर्म और 19th टर्म. ये हमें पहले लिया है T9. तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है वो लिख लो. T9 इक्वल टू 0 है, तो T29 इज 2 टाइम्स डबल T19. बस यही हमें प्रूव करना है. स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन 9. हमेशा की तरह लेट द फर्स्ट टर्म and common difference of given AP be A and D respectively. हो गया. Therefore, what will be T9? अभी Tn का फॉर्मूला निकालो. फाइंड Tn, पहले Tn का फॉर्मूला लिख लो. Therefore, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. ये फॉर्मूला है. So what will be T9? Therefore, T9 will be A plus 9 minus 1 into D, where n equal to 9 and T9 equal to 0. ये दिया हुआ है. Therefore, 0 equal to A plus 8D. Therefore, in short, A plus 8D equal to 0. इसको हाईलाइट कर लो. अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर. वो है T28 या T19 लेते हैं. चलो, therefore T28 लो. T28 या T29 है? T29, sorry. 28 T29. Therefore, T29 equal to A plus 29 minus 1 into D. Therefore, T29 will be. अच्छा यहाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हमें ये A की वैल्यू निकालनी होगी. Therefore, what will be A? A will be, इस पहले आ गया था. 8A comes on left hand side becomes 8D. So इसको याद रखो. Now we go to T29. Therefore, T29 equal to A plus n minus, n का मतलब कितना? 29 minus 1 into D. But T29 equal to, what is A value? Minus 8D plus 27D. Therefore, T29 equal to, subtract करो,
इट विल बी 19d। ये है आपका इक्वेशन 1। अभी हम 19d T19 पे जाते हैं। Therefore T19 equal to A plus 19 minus 1 into D. Therefore T19 equal to A is minus 8D plus ये कितना हुआ 7, ये 18D है ना, 18D। एडिट करायचं, थोडं मागे गेलं पाहिजे। इसके बाद चालू करते हैं। हमें T29 ना, T29 क्या होगा, A plus n minus 1 into D. N is 29. 29 minus 1 into D. Therefore T29 equal to, ये A की वैल्यू लो minus 8D equal, sorry, plus ये आएगा A 28D. This will be 28D. Therefore T29 it will be 20D. इसको हाईलाइट करो। This is equation number 1. अभी ले लो T19. What is T19? A plus n is 19 minus 1 into D. Therefore T19 equal to A की वैल्यू कितनी है, minus 8D plus 18D. Therefore T19 is equal to 10D. इसको हाईलाइट करो। अभी लिखो। Now from equation 1, T29 equal to 20D. Therefore we can write T29 equal to 2 into bracket 10D. But from equation 2, T19 is 10D. बराबर ना? Therefore T29 equal to 2 into bracket T19. Hence proved. So with that, practice set 3.3 completed. We go to 3.4.